It's Shalimarwada, it's Vishrambagwada, everything cultural and historical. Yet there are these IT sectors which deals with the entire modern technology used for interior spaces, hence futuristic design approach. And the last one, which actually defines our city, that is restoration projects. Restoration of furniture, restoration of interiors, of architecture. This is what the entire city of Pune is about. So here we start with a program based on these 5 concepts, and the students have made their entire work based on these 5 themes. So I would like to all of you all to give a round of applause for yourselves.
I am Swati Sonar. Hello, my name is Boor Aditi. Hi, my name is Neha Rohidas Rane. Hello, I am Purva Sharma. I am Akshada Verma. My name is Chaitanya Dangat. I am Devyani Zagde. My name is Chaitrali Shete. My name is Vijaya. लाइफ इन पुणे 2020 एंड बियॉन्ड ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, उनका नॉलेज बाहर दिखाने के लिए, वो आगे जाके क्या कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। Hi, I am Swati Sonar, student of TTA Chinchwad. मेरा नाम अभय नायक है। मैं फर्स्ट ईयर इंटीरियर डिज़ाइनिंग TTA चिंचवाड़ में स्टडी कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम अंजलि कुंभार है। मैं TTA चिंचवड़ में फर्स्ट ईयर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। हाय, आई एम पीयूष बोरोले. आई एम स्टडिंग फर्स्ट ईयर इंटीरियर डिझायनिंग इन TTA चिंचवड. मी सौरभ सस्ते. मी अजय ज्ञानेश्वर जाधव. मी प्रथम वर्षामध्ये इंटिरियरमध्ये शिकत आहे. I am very glad to be a part of this grand exhibition, and TTA has given us great opportunity to be a part of Life in Pune 2020 and beyond. Me and my group have designed a floor lamp, which is a wooden lamp, and we have chosen ancient theme because I think nowadays due to modern furniture we are missing out the feel of traditional and ancient furniture. That's why we have chosen the ancient theme. हमने सबसे पहले प्लान बनाया, उसके बाद हमने स्केचेस, बहुत सारे बेसिक स्केचेस बनाए, उसके AutoCAD में 3D बनाया, उसके बाद हमने मटेरियल सर्वे किया और फिर प्लान एग्जीक्यूट करके हमने एक वुडन साइड लैम्प बनाया है। I have facing so many problems in selecting the materials. First we have making the upper side of the lamp hexagonal pyramid. Select the plywood, but the finishing is not good. और हमने ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सागवान वुड का यूज़ किया है और 3 कोट ऑफ गोल्डन पॉलिश का यूज़ किया है और फैब्रिक यूज़ किया है, खादी का फैब्रिक हमने यूज़ किया है इस पर। पण टीचरनी आमच्या एक प्रोडक्ट बनवण्यासाठी सांगितले होते. मी त्यातून एक वुडन हँगिंग लॅम्प तयार केला आहे. त्यासाठी मी रिसायकलपासून एक हँगिंग लॅम्प तयार केला आहे. त्याचे वूड, ग्लास, बॉटल, लाइटिंग अँड फ्लावर्सचा उपयोग करून मी हे सगळं लॅम्प तयार केला आहे. जेव्हा मी गाणे ऐकत होतो तेव्हा गाणे ऐकताना माझ्या मनामध्ये विचार आला की आपण वॉल हँगिंग डेकोरेटरसाठी काहीतरी करूयात. तेव्हा गाणे ऐकता ऐकता माझ्या मनात विचार आला की आपण गिटार बनवूयात व ते गिटार बनवून वॉल हँगिंगसाठी आपण ते ठेवू शकतो. And lastly, I would like to thank TTA and faculty over here for supporting us throughout the process. Thank you. Hello, my name is Ruchira Jadhav. I am the student of Interior Designing from Times and Trade Academy Chinchwad. Hello, my name is Boor Aditi, first year interior designing from TTA Chinchwad. Hi, I'm Diya Mandesha, first year interior designing student from TTA Chinchwad. Actually, when we did research, we came to know that nowadays people are not using old sewing machines due to newer and advanced technology in sewing machines. Most of the people are using electrical sewing machines. So we thought that we should make wise use of old sewing machines, and we developed a portable basin from it. We have made this product and we learned a lot through by making this product. I am very thankful to all my faculties and Nikita ma'am for giving us this platform to do something. This is my first product which I made in TTA Chinchwad. हॅलो, मी प्रतीक साळुंके. Hi, my name is Neha Rohidas Rane. I am first year interior designer student. So we are making 2 products. One is side table and another one is bookshelf. Side table is inspired from bullock cart and the bookshelf is inspired from mango cart. सो ह्याचा कन्सेप्ट डेव्हलप झाला जेव्हा मी गावाकडे गेलतो तेव्हा राहिलेल्या मँगो कार्टचं काय करायचं, सो त्याचा बेस्ट यूज इंटिरियरमध्ये कसं करू शकतो ते मला इकडे आल्यानंतर कळालं. सो हा एक बुकशेल्फ और पार्टिशन म्हणून पण आपण यूज करू शकतो. थँक्यू म्हणतो सगळ्या माझ्या TTAच्या फॅकल्टी मेंबर्सला की त्यांनी हे प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करून दिलं आणि आम्हाला आमचं टॅलेंट दाखवायचं एक स्टेज दिलं. So while making this product, my experience was good. Many problems came, but Arpita ma'am gave solution and helped us a lot. TTA gave us this opportunity and encouraged us to represent ourselves among all the people. So thank you so much for that. Hello, I am Purva Sharma from TTA Chinchwad. मेरा नाम अश्विनी पवार है. मैं फर्स्ट ईयर इंटीरियर डिज़ाइनिंग TTA चिंचवड़ में पढ़ती हूँ. Hello everyone, I am Akshada Verma from TTA Chinchwad. हेलो, मेरा नाम खुशबू चौधरी है. मैं फर्स्ट ईयर इंटीरियर डिज़ाइन TTA चिंचवड़ में पढ़ती हूँ. मेरा नाम रवीना शेटे है. मैं TTA चिंचवड़ से इंटीरियर डिज़ाइन कर रही हूँ. हमने कुछ डेकोर की चीज़ें बनाई है. उसके पहले हमने मार्केट सर्वे किया था
तो उसमें से हम ये जार और ग्लास के बल्ब लेके आए क्रॉकरी स्टोर से, और जो साइड पे एक्स्ट्रा प्लाईवुड जो बचा होता है उसके कुछ टुकड़ों को यूज़ करके हमने इसको पीछे यूज़ किया है इसके। मुझे नेचुरल थिंग्स पसंद है, सो हमने इस प्रोडक्ट में नेचुरल थिंग्स का यूज़ किया है, जैसे कि प्लाईवुड, बाम्बू, जूट रोप और ये सारी चीज़ें से हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है। इसमें ज़्यादातर की इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज किए। हमने 70 to 80% हमने रिसाइकल करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। We all are working to make your space more attractive and beautiful. We have taken the motivation of natural things, so to give a natural touch to our product. Thanks to Arpita ma'am who motivated us and who guided us throughout our project. I am very thankful to TTA for giving us this great opportunity. Thank you. I am Devyani Zagde. I belong to interior design domain and I am a second year student from TTA Chinchwad. Hello, my name is Priya Raidas. I am an interior designing second year student. My name is Chaitrali Shete. Now I am pursuing second year bachelor degree of interior design. Hello everyone, my name is Shraddha Farande. I am an interior designing student of second year from TTA Chinchwad. हाय, माझं नाव पवन निरोळ आणि मी TTA चिंचवड ब्रांच सेकंड इयर इंटिरियर डिझायनिंगचा कोर्स करतोय. हे प्रोडक्ट बनवायचा उद्देश असा की हे प्रोडक्ट आम्ही मेकअप किट किंवा मेकअप बॉक्सवरून इन्स्पायर झालो आहे आणि यावरची जी थीम आहे ती मी राजस्थानला गेलो असताना तिथं वॉल्सवर वगैरे बघितली. त्यावरून मला एक कल्पना सुचली की आपण यावर यूज करा, म्हणून वारली पेंटिंग थोडंसं ट्रेडिशनल असं त्यात यूज करून थीम आम्ही बनवली आहे. The theme inspire us is Warli painting. The inspiration for product is makeup box. This sitting can be used in many ways, like it is a multi-purpose sitting which is used as a breakfast table, working desk or a coffee table and many more things. At the last, I would thank you, our mentor Arpita Vyas ma'am and TTA for giving this opportunity. Thank you. Hi, I am Zeba Attar from TTA. I am first year interior student. I am representing my idea through this grand exhibition. I am Siddhi More from TTA Chinchwad, first year interior design. So I think why we recycle only metal, why we don't reuse cloth. So I go for cloths and I choose denim. I am Vijaya. I am from first year interior design student from TTA Chinchwad. I had made this product by using denim clothes. I would like to thank Arpita ma'am for helping me to make this product, and I would also like to thank TTA for giving me this opportunity to present myself. Thank you. हाय, मेरा नाम शर्वरी पाटिल है. मैं सेकेंड ईयर इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ TTA चिंचवड़ से. हमारे ग्रुप का नाम एनफ्यूजन ग्रुप है. हमने जो मॉडल मतलब फर्नीचर जो डिज़ाइन किया है वो एंशियंट और मॉडर्न का फ्यूजन करके डिज़ाइन किया हुआ है. So for ancient theme, we used a rope which is tied our chair of to backrest. We viewed that rope for the ancient theme, and for modern theme we use a bright color to our cushion. We face a lot of problems during this period, and we have make some artifacts. This is jute artifact and this is our focal point of whole set, and we face a lot many problems and we tackle them very gracefully, and our mentor Arpita ma'am, Akhil sir help us a lot. I am very glad to be part of TTA, and thank you to all Time and Trends Academy.
Preeti ma'am